स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी सभी स्टेट में वैकेंसी आने वाली है। आने वाले समय में आईआरबी की एग्ज़ाम्स होने वाली है। ग्रुप 5 की वैकेंसी ऑलरेडी निकल चुकी है एमपी में। एमएनएस की वैकेंसी निकलने वाली है, इसीलिए पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टर्म फॉर डिवाइस यूज्ड टू टेक द प्लेस ऑफ मिसिंग बॉडी पार्ट? ओके, ऑप्शन ए पेरोनेक्शन, ऑप्शन बी एबडक्शन, ऑप्शन सी एक्सटर्नल रोटेशन, ऑप्शन डी प्रोस्थेसिस। नो, राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रोस्थेसिस। ठीक है, यदि कोई भी बॉडी पार्ट है उसको अलग कर दिया जाता है तो या फिर हटा दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्थेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following has left side weakness? What part of a sweater is put on first? ऑप्शन ए बोथ स्लीव्स, ऑप्शन बी लेफ्ट स्लीव्स, ऑप्शन सी क्लाइंट्स चॉइस, ऑप्शन डी राइट चॉइस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि क्लाइंट को क्या है, लेफ्ट साइड वीकनेस है, ठीक है, तो वो स्वेटर कहाँ से पहनेगा? तो बोथ साइड से पहनेगा, लेफ्ट साइड से पहनेगा या राइट साइड से पहनेगा? तो ऑप्शन क्या है? लेफ्ट स्लीव को पहले पहनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज appropriate for a nurse aides to share the information regulating a client's status with? ओके, क्या है कि appropriate aids क्या है इंफॉर्मेशन रेगुलेट करने का क्लाइंट के साथ में? ऑप्शन ए एनी वन द नर्स एट सी फिट, ऑप्शन बी द क्लाइंट्स फैमिली मेम्बर, ऑप्शन सी द क्लाइंट्स रिमोट, ऑप्शन डी द स्टॉप ऑन नेक्स्ट शिफ्ट। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी द स्टॉप ऑन नेक्स्ट शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which help the clients who is recovering from the stroke to walk, the nurse aides should assist? Option A, one the client's strong side, option B, one the client's weak side, option C, from behind the client, option D, with a wheelchair. Now right answer is option B, on the client's weak side. Okay, now next question, the nurse aides is caring for a client who is assigned the nurse aides solved. Option A, speak loudly so that can hear two instruments, option B, ask to resign, option B, ask to resign the care of the client, option C, talk in a slow, calm, resuming manner, option D, tell the client to be quiet. Now right answer is option C, talk in slow, calm and resuming manner. Okay, क्या बोल रहा है इसमें कि द नर्व्स है, यदि आप उसकी केयर करें, किसी क्लाइंट की केयर करें तो उसको कैसे मैनर यानी कि कैसे असिस्ट करेगी, ठीक है, या फिर किस साइड से असिस्ट करेगी। तो क्या करना है कि इसको जो है कैसे मैनर में बात करना है। जो नर्सिंग एड है वो क्या कहता है कि जो नर्स है उसको स्लो बात करना है और एक प्रॉपर मैनर में बात करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इसमें देखिए आप, इन जितने भी क्वेश्चंस हैं काय से रिलेटेड आए हैं कि जो नर्सिंग एड्स है इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है और ये 2019 का पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस फॉर द पेडिंग साइड व्हील्स ऑन द क्लाइंट बेड इज टू, ऑप्शन ए, यूज दैम अ रेस्टिटेंट, ऑप्शन बी, हैव अ
place to cannot the call sign. Option C, protect the client for injury. Option D, keep the client warm. Now right answer is option C, protect the client from injury. Next question. Exercise that move each muscles and joint are called. Option A, adduction. Option B, range of motion. Option C, abduction. Option D, rotation. Now right answer is range of motion. Next question. How can the nurse at best help a client who is not accepting a loss? ठीक है, देखो मैंने पहले ही बोला कि ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, नर्सिंग एड से आए हैं। तो चलिए देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज लीव द क्लाइंट अलोन। ऑप्शन बी, कन्वाइज द client to be accept the loss. Option C, encourage the client to talk. Option D, discouraging individual activity. Now right answer is encouraging the client to talk. Next question. The Hamlich maneuver, abdominal thrust, is used to client who has. Option A bloody nose. Option B, the blocked airway. Option C, flan out the bed. Option D, impaired eyesight. Now right answer is option B, blocked airway. Hamlich maneuver क्यों यूज करते हैं हम? ब्लॉक्ड एयरवे को ठीक करने के लिए. Now next question. The best communicate with the client who is total deaf. The nurse aides should. Option A, smell frequently and speak loudly. Option B, smell often or talk rapidly. Option C, avoid eyes contact. Option D, write out information. Now right answer is option D, write out the infection. यदि कोई सुन नहीं पा रहा है तो हम क्या करेंगे, लिख करके बता देंगे उसको. Now next question. The nurse had to asked by the confused client what day it is. Nurse at should. Option A, explain that memory loss is natural and the data date is not important. Option B, ignore the request. Option C, point to the date on the calendar and say the date. Option D, provide the data and then test the client later. Now right answer is point the date on the calendar and say the date. Next question. To avoid pulling the calendar when turning a male client to catheter tube must be tapped to the clients. Option A, bed stick. Option B, upper thigh. Option C, bed form. Option D, hip. Now right answer is upper thigh. Next question. The nurse aides can assist client with their spiral needs by. Option A, take client to the nurse aides squatch. Option B, allow client to talk about their beliefs. Option C, avoid any religious discussion. Option D, talk about the nurse aides own spiritual benefit. Now right answer is option B, allow the client to talk about their beliefs. Next question. A nurse aide must wear gloves when. Option A, feeding a client. Option B, doing pericare. Option C, giving a back rub. Option D, doing range of motion exercise. तो क्या है कि जो नर्स है उसको कब स्पेशली ग्लव्स पहन के रखना चाहिए? तो डूइंग पेरी केयर. ठीक है, जब भी केयर दे रही है, पेरिनियल केयर दे रही है, कोई भी केयर दे रही है तो ग्लव्स पहन के रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. When getting ready to dress a client, the nurse aides should. Option A, get the first cloth the nurse aides can reach in the closet. Option B, give the client a choice of what is wear. Option C, you use the clothes that client wore
the day before. Option D, choose cloth that the nurse adds personally like. Now, right answer is give the client a choice of what to wear. Next question. If the nurse discovers fire in the client's room, the first things do is option A, call the nurse in charge. Option B, try to put out the fire. Option C, open window. Option D, remove the clothes. Now, right answer is option D, remove the client. Next question. In order to communicate clearly with the client who has hearing loss, the nurse adds should. Option A, speak in a high pitched tone of voice. Option C, stand behind the client when speaking. Option C, speak in third and slow manner. Option D, look directly at the client when speaking. Now, right answer is option D. Look directly at the client when speaking. Next question. Which of the following stage of dying is usually the final stage? Option A, anger. Option B, acceptance. Option C, bargaining. Option D, depression. Now, right answer is B. Okay, acceptance. हम लोगों ने मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ये सारे जो जितने भी स्टेप्स है, एंगर, एक्सेप्टेंस, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, ये जितने भी स्टेप्स है मैंने पढ़ाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ क्लाइंट से गॉड इज पनिश्ड मी और वाई मी, हाउ शुड ही नर्व्स एड्स रिस्पॉन्स? ऑप्शन ए, replying God does not punish people. Option B, listen quietly. Option C, ignore the client. Option D, make joke. Now, right answer is option B, listen quietly. Next question. The rule of embellishment is the option A, run a group of nursing home. Option B, work with the nursing home to protect client right. Option C, control the nursing home budget. Option D, prepare class that nurse adds. Take the learn about client and hygiene. Now, right answer is option B, work with the nursing home to protect the client right. Next question. A nurse aide who is active in her queries as assigned to care for a client who is not a member of any religion group, the nurse aide should. Option A, help the client understand the nurse at fifth. Option B, tell the client that it is important for the client to join some queries even if it is not a nurse at charge. Next option C, response the client's belief and avoid stirring religion discussion. Option D, range to have the nurse ads clear visit the client. Now, right answer is option C, response the client belief and avoid stirring religion discussion. Next question. The nurse adds notes that a client's mail has been delivered to the client room. The nurse adds should. Option A, open the mail and leave it on the client table. Option B, open the mail and read it to the client. Option C, read the mail to the make sure it doesn't contain upsetting news. Option D, give the client unopened mail and offer help as needed. Now, right answer is given the client unopened mail and offer the help to need. Next question. Which of the following is the correct
measurement of urinary output? Option A 40 OZ, option B 300 cc, option C 2 cup, option D 1 quarter. Now right answer is option B 300 cc. Next question. The client offered the nurse adds $20 bills as a thanks you all that the nurse ads has done. The nurse ads should. Option A take the money so as not to offend the client. Option A politely refuse the money. Option C take the money and buy the something for the floor. Option D ask the nurse in charge what to do. Now right answer is option B politely refuse the money. Next question. All of the following situation for examples of abuse of neglect except option A restating the client according to physician order. Option B leaving the client along the bathtub. Option C threatening to withhold the client meal. Option D leaving the client in which in await a soiled bed. Now right answer is option A. Option A is restraining the client according to the restraining the client according to physician order. Next question. If a client sitting in a chair in his room masturbating as the nurse had should. Option A report the incident to the other nurse aides. Option B tell the client to stop. Option C tug and tell the client to going the bathroom. Option D leave the client alone and provide privacy. Now right answer is option D leave the client and provide the privacy. Next question. To convert 4 unque of juice to million milliliter, the nurse add should multiply. ठीक है. ऑप्शन ए 4 into 5 ml, ऑप्शन बी 4 into 10 ml, ऑप्शन सी 4 into 15 ml, ऑप्शन डी 4 into 13 ml. Now right answer is option D 4 into 30 ml. Next question. In giving a care according to client bill of right, the nurse at should. Option A provide privacy during the client personal care. Option B open the client mail out without permission. Option C use the client personal possession for anterior client. Option D prevent the client for complaining about care. Now right answer is option A. Okay, provide privacy during the client personal care. Next question. A last sense a dying client with lose is. Option A smell, option B hearing, option C taste, option D sight. Now right answer is hearing. Next question. A client walks up during the night, asks for something eat. The nurse adds should. Option A check the client diet before offering nourishment. Option B tell the client nothing is avoidable at night. Option B explain that breakfast is coming in 3 hours. Option D tell the client that it is not allowed during at night time. Now right answer is option A. Check the client diet before the offering nourishment. ओके सो स्टूडेंट ये थे 30 इम्पोर्टेंट MCQs जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए थे मैंने. जो इसमें हमने अधिकांश नर्सिंग एड्स देखे जो शुरू के क्वेश्चन थे.
सबसे ज़्यादा देखिए शुरू के 30 क्वेश्चन में सिर्फ नर्सिंग एड्स ही पूछा है। जो आने वाले सभी एग्जाम्स में आप ये सोचिए, ये आरआरबी का क्वेश्चन पेपर था 2019 का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और आरआरबी में नर्सिंग एड्स ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म पूछी जाएगी, नर्सिंग एड्स पूछी जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाएगी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। मैंने आप लोगों को एकदम सिंपल पेपर के तौर पे ये बताया है। ये जो मैंने पीडीएफ लिया था उसमें बहुत रफ था, दिख नहीं रहा था, इसीलिए मैंने इसको दोबारा टाइप किया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, इसीलिए मैंने ऑप्शन में पूरा नहीं लिखी हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद अपने हाथ से टाइप की हूँ तो ज़्यादा टाइम लग रहा था। इसमें पूरे आपको 150 समथिंग क्वेश्चन हैं जो उसमें आए थे। बाकी के जो जीके और उसके क्वेश्चन मैंने हटा दिए, उसकी क्लास मैं अलग से लूँगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। ये जो क्लासेस है, आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की आप लोग याद रखिए, ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।